सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तुम अपनी मजलसना मेरा और दुरूद पाक पढ़ कर रास्ता करो, क्योंकि ये दुरूद पाक पढ़ना कल बारोज़ क़यामत थारे वास्ते नूर होएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन कराम तमाम खुश आमदीद का हमारे जितना भी सोशल मीडिया का प्लेटफार्म से तो अज हमारे नाल फिर मेहमान खसूसी जनाब गुलाम अहमद खारिज साहब मौजूद हैं, जरा थारी बारगाह यकदस्मा बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह की सैरफी सुनान की सादत हासिल कर रहे हैं। तो जनाब फिर तुम करो शुरू प्रोग्राम आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जोर अल्फ आखना सी ए बे वाम चलना रोंदा हिंद विच एक मैदान दुखिया। क्या बात है जनाब। ते अल्फ आखना ए बे वाम चलना रोंदा हिंद विच एक मैदान दुखिया। सुभान अल्लाह। ਉਹ ਵਕਵਾ ਆਲੂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤੂ ਪੈਗਾਮ ਦੁਖਿਆ। ਤੇ ਉਮਤ ਤੁਸਾਂ ਸੰਦੀ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਗਰੀਬ ਗੁਲਾਮ ਦੁਖਿਆ। ਉਹ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ ਅਦਾਂ ਬਚਾਇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ ਅਦਾਂ ਬਚਾਇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੁਖਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੀਨ ਸ਼ਗਦਾ ਇੱਕ शान उथे की करेगा शान गुमान कर गए। शीन शागदा एक शान उथे की करेगा शान गुमान कर गए। दो गज दे विच मुकान तेरा किड़ियां खावना सख्त वैरान कर गए। अल कबरन बाबिया कुल नफ्सन दाखले हुआ गल विंगा खूब बयान कर गए। वली नबी भी कबरां दे विच जांदा, वली नबी भी कबरां दे विच जांदा। कब्र रखेंगी अबदा हैरान कर गए। ते स्वाद सबर कीता जिन्ना दुनिया ते कर जांदियां बहुत नियालियो सी। स्वाद सबर कीता जिन्ना दुनिया ते कर जांदियां बहुत नियालियो सी। कलमा नबी सो बदा विरद जिन्ना नज़र वेलड़ा ने खियालियो सी। ते नज़र पा के जिन्हां दी गैर कोलों रख लियां तू गसालियो सी। अबद कब्र खाब ख्याल जिन्ना, अबद कब्र खाब ख्याल जिन्ना मैशर जांदियां पाक जुमा लियो सी। ते अल्फाज दी रात चोरो नाड़ रे कै पंजमी रात च बुढ़ार आइयां मैं। 6 दिन लागे मसीद नाड़ अंदर 8वीं बुढ़ी तकदीर पुचाइयां मैं। ते 9वें मुलांजी भी साढ़े वो संग आए बागां तरफ तो लैल चुलाइयां मैं।
ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਤੋਂ ਲਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਤੋਂ ਲਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗਰਮ ਯਾਰ ਦੇ ਹੂਮ ਆ ਕਈਆਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਸੀਨ ਸਖਤ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾਲੇ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ਕਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਮੇਲ ਦਿਸਦਾ। ਸੀਨ ਸਖਤ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾਲੇ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ਕਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਮੇਲ ਦਿਸਦਾ। ਕਾਹੀਂ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੀ, ਪਿੰਡਾ ਰਾਹ ਜੋਲਾਂ ਅਸਥੀ ਕੀਲ ਦਿਸਦਾ। ਤੇ ਤਖਤ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਡਾਡਾ ਹੈ ਦੂਰ ਮੁਸ਼ਕਲੋਂ, ਯਾਰ ਕੰਧ ਦੀ ਜੂਏ ਦੋ ਮੇਲ ਦਿਸਦਾ। ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਤੋਂ ਲੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਤੋਂ ਲੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜੂ ਕਰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਮੁਲਖੂ ਤੋਂ ਲੇਲ ਦਿਸਦਾ। ਤੇ ਰਿਓ ਰਹਿ ਜਾਸੀ ਤੇ ਸਵਾਦ ਸਬਰ ਲਾਮ ਲਾਮ ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ, ਹੋਰ ਮਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਤੇ ਚਾਰ ਲਿਖਾ ਛੋੜੇ। ਉਹ ਆਵੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਉਸੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਾਈ, ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਛੋੜੇ। ਤੇ ਹੋਵੇ ਸਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਬਰ ਤਾਈ, ਅਸਾਂ ਨਾਮ ਗੋਲੀ ਫਾਂਦ ਚੜਾ ਛੋੜੇ। ਹੁਣ ਅਬਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੂਲ ਬੋਸਾਰੀਏ ਨਾ, ਅਬਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੂਲ ਬੋਸਾਰੀਏ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਲਿਖ ਬੇਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਛੋੜੇ। सुभान अल्लाह। और है क्या ਤੇ ਦਾਲ ਦਿਆਂ ਨਸੀਤ ਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਨੇ ਮੂਲ ਨਾ ਸਡੂੜੇ ਦਮ ਮਾਏ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈ ਬਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕਦੀਆਂ, ਦਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲੋਂ ਜਦਾ ਰੰਗ ਮਾਏ। के घर बिसर गए यानी। कोई बात नहीं। नाज़रीन कराम, ये मानाल सूफ़ी बुज़ुर्ग जनाब ग़ुलाम अहमद खारी साहब मौजूद था। इन्हें को पहले भी एक बार कलाम थारी बारगाह में पेश करिए तो नाज़रीन ते तने बड़ो पसंद करियो। अगर तने जो चंगो लगो तने सवाब मिले तो दूसरे तो भी पेश करनो। ते नाज़रीन यो जनाब कलाम किसको तो अजी बाबा जी, यो अब आप जी साहब कर अच्छा, जिन्हें सीआरपी बाबा जी साहब रहमतुल्लाह लगी थी, जेड़ी पेश कर रहे थे जनाब मारना मेहमान हस्ती जनाब ग़ुलाम अहमद खारी साहब। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।